Welcome back to my channel. In this video tutorial, we'll discuss how to draw pie chart using plotly.express, ठीक है, inside the Python. Okay, using Python code. तो ये हमारा डेटा सेट है यहाँ पे. सो सैम्पल डेटा यहाँ पे अराउंड 5 to 6 कॉलम्स, ठीक है, लाइक कोड नेम, राइट, देन जेंडर, एज, एक्सपीरियंस, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कैटेगरी के अंदर मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पे कोड को और डिस्प्ले कर रहा हूँ वैल्यू यानी सैलरी कॉलम को, ठीक है, बाय यूजिंग प्लॉटली एक्सप्रेस. तो फटाफट यहाँ पे लॉगिन करते हैं. यहाँ पे गूगल कोलैब में ऑलरेडी मैंने लॉगिन करके बैठा हूँ यहाँ पे और फाइल को भी अपलोड किया. अगर आपको अपलोड नहीं किया तो यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा आपको. जैसे यहाँ पे जो आइकॉन में बता रहा हूँ यहाँ पे अपलोड टू सेशन स्टोरेज बोल के, ठीक है, ये फाइल को आप अपलोड करना और इमीडिएटली आपको लिखना है एक फाइल को पहले एनी डेटा को पहले शो करना. तो उसके लिए पांडाज पैकेज जो है डेटा शो करने के लिए कॉल करते हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पे इंपोर्ट प्लॉटली एक्सप्रेस एज ए px. तो पहले डेटा को रीड करते हैं यहाँ पे. सो डेटा फ्रेम इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv और ये जो फाइल है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो, फिर आप बोलो यहाँ पे कॉपी पाथ और इसमें आके पेस्ट कर दो, ठीक है, और यानी डेटा यहाँ पे आ गए, डेटा यहाँ पे इसके अंदर आ गए. और साथ में अभी जो है विल टेक फिगर इक्वल्स टू से px डॉट pie chart, px डॉट pie chart, then call the data frame. Okay, so inside data frame you need to call first one, say like names column will take column as a code, and the second one as a like values, so values as salary column. Then you can add a title also if you want, okay. So here I'll add title like say employee details, okay. Then we'll call the show method to print this chart on screen. So fij.show. So let me run the code. So once you press here, so you can see here, so code executed. And यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे see these are the values or displayed salary values basically, like if you like move the cursor, अगर आप कर्सर यहाँ पे इसके ऊपर यानी ओवर या तो मूव करते हैं यहाँ पे विल डिस्प्ले द सैलरी. लाइक से एग्जांपल एम्प्लॉय कोड 5 का सैलरी 63,000, एम्प्लॉय कोड 4 का 52,000. so this is more interactive compared to the previous one we draw using matplot library. So there are two packages for to draw the graph. One is called matplot library and another one called plotly.express. So plotly.express is more interactive than compared to the previous one called matplot library. So this is a short video on how to draw pie chart